So last class we have read about the liquid drop model, and also we have seen what is the resemblance between this liquid drop and the nucleus, and many other models were discovered at that time, but those models could not give a correct explanation to the structure or the behavior of nucleus. Okay. So reason is what? Reason is that there were few elements having certain type of nucleons, number of nucleons, which show different kinds of energy level. Means energy, not level, energy. That means what? That means ऐसे कुछ न्यूक्लियॉन्स थे जिनका नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. ये 7 नंबर आपको याद रखना पड़ेगा. Okay, I have already discussed in the last class that these are called magic number. Okay, let me use just a second. Instead of this word file, कल मैंने देखा था एक वो नोट होता है, उसमें टीम्स में वो फीचर है. Last class I taught other students in that way. Let me use that format. एक second before. Yours is 2023. Okay. Okay, can you see this one? Yes, sir. Thank you. It's not. Leave it. Let us use this word file. Some issues in that. सर आप माइक्रोसॉफ्ट का नोट यूज कर सकते हैं सर, वो भी थोड़ा बड़ा स्क्रीन प्रोवाइड करता है. हाँ हाँ, वही नोट का ही मैं कल से वो उसी का ट्राई कर रहा था, बट पता नहीं मेरे सिस्टम में नहीं हो रहा है. बहुत ट्राई किया बट इट इज नॉट हैपनिंग. लीव इट. लेट अस यूज दिस वर्ड फाइल. ठीक है, वर्ड में तो दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर. नोट Yes, होता sir. तो थोड़ा, हाँ थोड़ा अच्छा क्लैरिटी आता है उसमें, लेकिन देखते हैं नहीं होता है तो क्या करें. ओके, एनीवेज, so I'll write in here only. So visible now to everyone? Yes, sir. What file is visible? Okay. So I told you about magic numbers. So what they found that few numbers like 2, 8, 20. You remember these numbers: 2, 8, 20, then 28, then 50, 82, and 126. These 7 numbers. इसके बाद भी है, like after 126 you have another number that is 184. So we'll see that after few minutes. So these are the magic numbers, and they found that these numbers, जो न्यूक्लियॉन्स का इतना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है दिस न्यूक्लियॉन्स में, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में होता है, तो ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं. दे शो ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज. दे शो दे आर वेरी मच स्टेबल देन देयर नेक्स्ट नेबरिंग न्यूक्लियस. So that is why the reason behind this magic numbers was not correctly explained using those previous models. Okay, and experimentally it was found that these numbers are abundant than other nuclei. Okay, these magic numbers are very much in number than any other nuclei if you study the complete periodic table. And if you compare the atomic case and the nuclear case, in atomic case, what happens? How the electrons are arranged? We know that the potential is provided by the Coulomb field.
Okay, this in case of atomic model or atomic theory, what you have read, there the potential is provided by the Coulombic field of the nucleus. Okay, nucleus provides a Coulomb field to that. So the orbits are controlled by some external agent, that is the Coulombic field of the nucleus. But when you get into the nucleus, there you do not have any kind of external agent. Okay, that means there is no such potential. We cannot define them in a particular potential well diagram. Okay, we'll see that after some time. So these are another discrepancies. And we know that the electrons which moves in their orbit, they are very less in mass. And even if you have more number of electrons revolving in a particular orbit, they do not collide. Okay, because they are situated very far away from nucleus, and their nuclear distance, sorry, the radius or the radial distance is little bit larger. So electrons do not encounter themselves, they do not interact or they do not collide among themselves. But what happens to nucleons? We know that nucleons have mass roughly 10 to the power 4 times larger than the electrons, and their diameter is also comparably smaller than the what is the diameter of the distance from nucleus to electron. So itna come diameter and more number of nucleons, how they are not interacting. So they should interact, they should collide, but they are not colliding. So what is the reason behind that? That means the nucleons are moving in a well-defined orbit. Okay, the nucleons, you can say that they are moving in a well-defined orbit when a single nucleon can make collision with many number of nucleons. But this never happen. These are some of the questions which scientists thought what is the reason for this magic number, or why Hello, it is called magic number, because they could not understand the reason for this. That is why they have given the name called magic number. There is nothing called magic here. Nuclear strength can be detected. Okay, am I audible to all? sir. Hello, हाँ hello, हाँ ठीक. सर आपका आवाज Yes. कट कट के आ रहा था मुझे. पता नहीं मेरे में गड़बड़ था या आपके में. अच्छा, सबको हो रहा है कि ओनली आतिक को हो रहा है आवाज करके? नहीं सर, मेरा तो अभी भी आ रहा है सर, कट कट के। एक्चुअली द थिंग इज दैट जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, टीम कंज्यूम लॉट्स ऑफ इंटरनेट, मतलब बैंडविड्थ. तो इसीलिए दिक्कत होता है. जब हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो आराम से चलता है. Okay, shall I stop recording? Already 8 students are there, 7 students are there. Do you require no recording? सर नोट्स मांगने से भेज देंगे. बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग. नोट्स तो नहीं है मेरे पास. नोट्स कहाँ से दूंगा? मैं तो जो नहीं नहीं पढ़ाता सर, हूँ वही. वो लोग नोट्स मांगे तो हम लोग भेज देंगे बोला था. अच्छा, हाँ, इसीलिए आप लोग नोट्स करते रहो. सी, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड दैट एवरीबॉडी शुड टेक नोट्स व्हेनेवर आई एम टीचिंग. ओके, आई डोंट प्रिपेयर एनी नोट्स फॉर यू. इसलिए आप लोग सिंसियरली नोट्स बनाओ. अगर वो लोग मांगेंगे तो आप दे देना. ठीक है, तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर दें. अच्छा, नाउ इट इज ऑडिबल. यस सर. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. अगर फिर से हुआ तो मुझे बीच में रुकना. ठीक है. Okay, so what I told is that the scientists at that time they thought that what is the reason behind the nucleons number, if it is 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, why it is called magic number, and why we see a strong nuclear stability at this particular nucleon number. Second thing is that if nucleons are so closely packed among themselves and the nucleus diameter is much less than the electrons orbit that diameter, then how it is possible that nucleons are not interacting or colliding among themselves? तो अगर वो कोलाइड होते तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करता. सिंस इट इज नॉट हैपनिंग, सो न्यूक्लियस इज ए स्टेबल in a stable form. So what is the reason behind that? So the reason can be, you can say that the nucleons are moving in a well defined orbit. Remember, nucleons
moving in a well-defined orbit. This can be one of the reasons. Why? If their orbits are already well defined and each orbit, each nucleon has particular amount of energy, then there is a probability that they will not interact or they may not interact or collide among themselves. So this is one of the reasons. So based on this thing, many other models were given. The first thing was given by Mayer. Okay, Mayer was one of the scientists. He gave in 1948. He gave the concept of cell model, and in this cell model, he could explain the magic numbers. Okay, he could explain. But the thing is that in order to give a mathematical representation to that, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In order to give a mathematical representation to that, we need certain potential energy diagram. We need a potential well diagram. Like in quantum mechanics, this is not taught to you, so you'll not understand in details, but I'll just briefly explain you. Okay, so Mayer ने explain किया in 1948. He gave the theory of cell model, and in this cell model, he could explain the origin of this magic numbers. He has taken certain assumptions, okay, and he has explained this thing. But the problem he faced is that he could not explain this cell model in a particular potential diagram. Okay, because he said that either the cell model will have a rectangular, like, have you seen this kind of square well potential called rectangular square well potential? इस तरह से होता है. दो टाइप का पोटेंशियल उन्होंने एक्सप्लेन किया. एक होता है आपका square well potential. This is not there in your course. This part what I am writing right now. Square well potential. Another one will be your normal potential well. That means this harmonic oscillator potential. Okay, harmonic. ये आप लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे oscillator potential. Okay, so he explained that in case of your square well potential, what happens? We have a finite, what is that called? That edges like this. For example, if this is the square well potential, let's say V of R is the potential, and let's say this is your R, and let's say this is your V of R, then it will have a perfect boundary. Okay, let's say this is minus V naught. So here he explained that if cell model supports this square well potential, अगर cell model को हम square well potential के method से उसको समझाना चाहेंगे mathematically, then what happen? We assume a potential well with a infinite valve. Okay, with a infinite valve. So let's say this V of R will be now minus V naught when this R is less than R naught, and it will be 0 when if R is greater than R naught. ठीक है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन using this square well potential, he could explain the magic numbers, but not in a proper sequence. Okay, all the magic numbers he could not explain. Few he could explain, few could not fall in the same pattern. मतलब जैसे कि मान लो कि 2 8 20 28 50 है, मान लो उन्होंने 2 8 20 समझा पाया, लेकिन 28 कहाँ से आया वो समझा नहीं पाए. Then he could explain 50. So the sequence was not maintained. Okay. Now coming to harmonic oscillator potential. So what is the difference in harmonic oscillator potential? This square well potential is having a infinite sharp edges. Okay. The harmonic potential diminishes steadily at the edge. तो ऐसा बोला जाता है. In harmonic oscillator potential, the potential diminishes steadily at the edges. जहाँ पे एज होगा, यहाँ पे ये जैसे कि ये एज है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में क्या होगा, इस तरह से होगा डायग्राम. यहाँ पे सपोज एज है, यहाँ पे वो डिमिनिश हो जाएगा. दैट मीन्स एज विल नाउ नॉट बी देयर. सिमिलरली लाइक दिस.
This is your harmonic oscillator potential. So here the mathematical representation is given as minus V naught plus half k r square. Okay, so see the difference in the mathematical part. So this potential and the square wave potential provide a infinite sharp edges, and the harmonic oscillator potential it diminishes steadily at the edges. So as a result, what happens? यहाँ पे जैसे कि स्मॉल गलती यहाँ पे हो गया है. This part here the potential will be slightly above. That means this part is called your minus V naught, and this part is called your V of R. Okay, बहुत ही कम होता है. लेकिन इस पोटेंशियल में भी they could not explain all the magic numbers. So what Mayer did, he said that maybe the nucleus is having a compromise between this square wave potential and harmonic oscillator potential. So based on these two potential diagram, another scientist named, that is called, you'll read this potential about this potential in your masters in nuclear physics. It is called Wood's action potential. Okay, what is the meaning of this Wood's potential? What is the mathematical form of that? He combined both the things, that is 1 plus e to the power r capital R minus small r by t. No need to understand कि ये कहाँ से आया, just समझो कि mathematical part ये होता है. Because whatever I'm explaining, these two things is not there in your course right now in your syllabus in B.Sc. So unlike this square wave potential, this Wood section potential do not have sharp edges. Okay, sharp edge नहीं होगा. That is the reason why one of the nucleons can get converted to other type of nucleons immediately by exchange of one energy particle or by exchange of certain mass, that is pion. Okay, and this potential closely approximates the nuclear charge and matter distribution. Okay, so as a result, what happened? We could now easily predict all the magic numbers present in our complete periodic table. Understood? Okay. Yes, sir. Yes. तो ये दोनों चीजों को मेयर ने समझाया. So let us see one more thing, that is called the assumption. What are the assumptions he has taken in this cell model? So assumptions are there in your course. So this part you can take the notes. Assumptions of shell model. So the first assumption is nucleons in a nucleus move independently in a common mean potential determined by average motion of all other nucleons. ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है. जो मैंने आपको वुड सेक्शन पोटेंशियल बताया था, ये उसी का theoretical explanation है. So what is that? Nucleons in a nucleus move independently in a common mean potential that is determined by the average motion of all other nucleons. Okay. Second point is protons and neutrons. Protons and neutrons separately
fill the nucleus. Okay, separately they fill the levels. Sorry, fill the levels, energy levels in the nucleus. Third point, most of the nucleons are paired. I have explained this point earlier also. Most of the nucleons are paired. I have explained this thing why pairing is important. Okay. So what is the reason for this? Or sorry, not reason. Reason I have already explained. Hope you remember. So what is the benefit of having this pairing of nucleons? So because of the pairing of nucleons, even though the nucleons have a magnetic moment, but pairing of nucleons will contribute a zero spin and zero magnetic moment. Due to pairing, it will have zero spin and zero magnetic moment. Okay, so as a result, what will happen? The paired nucleons will form an inert core. इसका result क्या होगा? Paired nucleons will form an inert core. Okay, that means suppose you assume that if in a nucleus all the nucleons, that is protons and neutrons, they are uh, separately filled and they are now in the paired state. Okay, so as a result, the complete nucleus will behave like a inert core. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so when the nucleus will behave like a inert core, that means it will not have, or you can say it will, you require a lot of energy to break the nucleus, lots of energy, and that energy that is required is not in electron volts, it is now in mega electron volts, because you know that in order to remove one electron, you require some electron volts of energy. But for nucleons inside the nucleus, you require mega electron volts of energy. Okay, so you can now convert this mega electron volt to joule. Okay, so you can see that enormous is required. So that energy is not readily available. Okay, in our nature, that nucleus break hota jayega automatically. It doesn't happen. That's why we say that atom is stable. Understood now? Yes. Is it clear up to this? Yes, sir. Okay. And another most important thing about the nucleons, what he has explained is that spin orbit coupling. ये बहुत important point है. तो spin orbit coupling क्या होता है? Let us see. Spin orbit coupling. What is spin orbit coupling? Mayer has explained that this nucleon, they have both spin angular momentum as well as they have orbital angular momentum. You must be knowing the definition of spin angular momentum and orbital angular momentum. You must have read it. Yes or no? Yes. Okay. So since the nucleons, that means both protons and neutrons, they move in an orbit as well as they spin around their axis. So as a result, you will have a spin angular momentum, orbital angular momentum, which is written as like this. The spin is written as small s. Sorry, spin is written as small s,
and orbital angular momentum is written as ls. इसको ls coupling भी कहते हैं, spin orbit coupling, or you can also say ls coupling. Okay, L मतलब orbital angular momentum, S मतलब spin angular momentum. And remember, the formula is like this. Okay, the spin angular momentum is given as is equal to S into S plus 1 H cross root over. And usually it is written in the mod. Okay, the spin angular momentum is given in this form. Orbital angular momentum is given in this form. L into L plus 1 H cross root over. Remember these two formulas, very important formula. सर ये Okay, बड़ा एच इधर क्या है? कौन सा? सर वो एस एस एच है या एस प्लस वन है? S है एस S इंटू into S plus 1 ओके सर, H ओके सर. cross. S ये S है, is S plus, okay अच्छा ये H दिख रहा है. Okay, wait, this is S plus 1 is L plus 1. Okay, so this was proposed, and the strong coupling between this orbital and spin angular momentum exists for each individual nucleon. Remember, these two things exist for each nucleon, जितने भी nucleons हैं. So as a result, what will happen? The nucleon energy level splits into two parts. समझ आया मैंने क्या बताया? As a result of this spin orbit coupling, the nucleon energy level splits into two sub levels. Understood? ये सबसे important point था to describe the magic numbers. तो उन्होंने बताया कि because of this strong spin orbit, so spin angular momentum and orbital angular momentum together, जब हम इसको मिला देंगे each न्यूक्लियन के लिए, तो ओवरऑल न्यूक्लियस के लिए जो होगा एनर्जी लेवल वो बहुत बढ़ जाएगा. ओके, सो एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियन energy level, what happens? This nucleon energy level splits into two parts. Okay, two sub levels. First sub level and second, these are the sub levels. Splitting हो जाता है. That is why yesterday I have shown you one diagram, कैसे split होके एक दूसरे के ऊपर वो लोग चढ़ के उनका जो configuration होता है. We will see that today. So now what happens here is the total angular momentum quantum number. The total angular momentum J is given as L plus or minus half. That means you will have either L plus half or you will have L minus half. Okay, कब plus half use करोगे और minus half use करोगे? Because whenever you will draw that energy level diagram, how will you know that which one will go? इसका ये एक कन्वेंशन है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये ऊपर ये नीचे जाएगा. ऐसा कन्वेंशन वाइज वी हैव गिवन दैट द साइन L plus half level goes down in energy. Remember, L plus half level goes down in energy. It will be written down. L minus half goes up in energy. Remember the pattern. So whenever you will find out this S, from that S you will find out the corresponding L, and from that S and L you will find out the corresponding J. After finding the J, you will split the levels, and while splitting the levels, you have to remember that L plus half will be written down, L minus half will be written up. Understood? Is that clear? यस सर. Okay. So now we will see the energy level diagram. Before that, few other things you should remember. I think ये आपको बताया गया होगा in your 12th class, that suppose we have S, P, D, F, G, H. What is this thing? इसको क्या बोलते हैं?
orbitals. ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल का वैल्यू कितना होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. When L equal to 0, how will you know how many electrons? Now number of electrons or let's say nucleons, not particles हम लिखते हैं, electrons नहीं लिखते हैं, let us write particles. कितने particles exist करेंगे? And remember, all these things will follow Pauli's exclusion principle. Okay, keeping that in mind, now we have to find out कितने number of particles exist कर सकते हैं इस energy level में. ठीक है, तो S state में क्या होगा? L equal to 0. So the formula is L into 2L plus 1. तो L 0 हो गया. Let me recall the formula just a second. P के लिए होता है 6, D के लिए होता है 10, 2 to the 4, 5 to the 10. Yes, this is the formula, correct. So the formula is L into 2L plus 1. L into 2L plus 1 in order to find out the number of particles. Remember this formula. Okay. So L equal to 0. तो यानी कि 2 into 0 plus 1 is 1. 1 into this इधर 0 हो गया ना. 2 into 2L plus 1. I think some mistake I am doing. Just a second. Give me 2 minutes. S के लिए 2 होता है. So how will you get 2 for L equal to 0? D state. D should have 10. यहाँ पे होगा 6. यहाँ पे होगा 10. So D 10 कैसे होगा? 2, 4 plus 1, 10, 1. इसका एक फॉर्मूला है. आई थिंक जस्ट फॉरगेटिंग द फॉर्मूला. नंबर्स विल बी 2, 6, 10 एंड दिस विल बी F के लिए होगा 14. सीक्वेंस आई नहीं रिमेंबर, but there is a shortcut formula to remember this. 2 into 12 plus 1, I think. 12 plus 1. So try to substitute the values, all of you. Let us Yes, check. sir. ये वाला सही है. 2 तो into 12 plus ये वाला 1. सही हो रहा है ना? Yes, sir. ये वाला सही हो रहा है ना? Yes, sir. So L 0 हुआ, तो 0 होने पे ये 1 हुआ, तो 2 into 1 2 होगा. L 1 होगा तो 2 into 1 2 plus 1 3 to the 6. Yes. 2 के लिए क्या होगा? 4 plus 1 5 to the 10. 3 के लिए होगा 6 plus 1 7 to the 14. Yes, this is the formula. So sorry for this mistake. It is 2 into 2L plus 1. Okay. So this is the shortcut formula to remember. So similarly for 4, 4 to the 8, 8 plus 1 9, 9 to the 18. Similarly 5, 5 to the 10 plus 1 11 to the 22. So in this way you will have to remember the sequence कि कौन से लेवल में कितने number of particles exist कर सकते हैं. Okay, and this is all depending on the spin orbit coupling. Okay, so you got L value, you got S value. Okay, S value is what? This S and ये जो spin angular momentum का S अलग है. तो according to spin angular momentum जो S है हमने जो देखा था ये S that is equal to S into S plus 1 H cross. ठीक है, you remember this formula. So if you see the spin will have either plus half or minus half. ठीक है, understood? It is always Yes, sir. half spin. So if we consider the half spin, let me mention here. Okay, no problem. I can put it. I can separate that. Okay, so spin is always half because we know that these are the fermions. Okay, so half integer spin. So now you have to find out this
S, this is the L, and from that you can find out the J. Okay, so let us first draw the diagram, then eventually you will be able to understand. So first energy level diagram is, let me draw this one, that is 1P. Okay, okay, before that I have to say to you one more thing, that how will you remember, the first 1P, 1S, then in between 1P and 2S you have 1D. How will you remember that? Another sequence is there, you remember, that is called 1S, 1P, 1D. Okay, you remember these things or not? SPD levels, सर 1S, वो 1, 1s 2s 3s फिर उसके साइड में 2p 3p फिर उसके साइड में 3d हाँ, उसके साइड में 4 वो तो वाला. हाँ, 1S, 1P, 1D, this is 1F, this is 1G, 1H. Let us write up to this. Then leave 2. Okay, leave नहीं this सर 2 सब s vertical होगा space इसमें. blank. इस सीक्वेंस में ऐसे जाएगा, देखो पैटर्न कैसे बनेगा. Here you will have 2S, 2P, 2D, and this is 2F. Similarly, again leave this 2 place blank. Okay, then you have 3S, 3P. So now your pattern will be 1S, 1P, 1D. In between that you will have 2S. Okay, so let me show you this formula. 1S, 1P, 1D, then 2S, then you have 1F, 2P, 1G, 2D, 3S, 1H, 2F, 3P. So like this will be your filling. Okay, how will you fill? First like this. ये इसके बाद यहाँ से फिर ऐसे जाएंगे 1P, then 1D, then you go to 2S. From that 2S you come down. Again you go 1F, 2P. Again go to सर ये 1G, 2D, अलग सीक्वेंस है 3S. सर. ये अलग है. यू डोंट रिकॉल दैट अबव प्रिंसिपल जो आप लोग पढ़े थे, वो अलग है. ये मैं सर न्यूक्लियस तो की बात. दोनों अलग अलग फीलिंग होगा मतलब सर. हाँ ऐसे क्यों हाँ, सर? ये क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का बात अलग है, यहाँ पे हम न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं ना. न्यूक्लियॉन्स ओह का अच्छा अच्छा पैटर्न अच्छा इस तरह ठीक है से. सर ठीक है सर. ओके, दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इलेक्ट्रॉन. ऐसे था ना अबव प्रिंसिपल का फीलिंग, ऐसे ऐसा होता यस था. सर यस सर. हाँ, ये Yes, यहाँ पे sir. ऐसे नहीं. यहाँ पे ये पैटर्न का फॉलो करना है होगा. अब देखो जब आप डायग्राम हम बना लेंगे तो इतना डिफिकल्ट होगा कि हमको याद रखने में मुश्किल हो जाएगी. कहाँ पे कौन सा नंबर घुस जा रहा है हमको समझ में नहीं आएगा. ओके, लेट मी शो यू जस्ट अ सेकेंड. मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा था, दिखाता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. यू सी दिस वन. यस, ठीक. इज इट विजिबल? यस See the energy level diagram. Forget this left part. This is the energy level diagram. Number of particles, magic number. So you see 1P, 1D, 2S, फिर 1F, 2P के बीच में ये P अंदर चला गया. उसके बाद यहाँ पे 1G, 2D, 3S. तो पहले G रहेगा, उसके भीतर D, उसके भीतर S. ठीक है, इतना लंबा पैटर्न होता है. तो ये मैंने सिर्फ 7 तक बनाया है. लैम्डा 7 मैंने लिया जहाँ पे 1I, 2H, 3F, 4P होगा. इसके आगे भी है. ठीक है, तो सिमिलरली इन दिस वे वी कैन प्रोसीड फॉर अदर वैल्यूज ऑफ लैम्डा. लैम्डा 8 लोगे, देन 1I के बाद क्या आएगा, जो पैटर्न होगा, वट एवर आई हैव रिटन हियर. इफ यू सी 1H, यहाँ पे मैंने दिखा है ना, H के बाद क्या है, I. दिस इज J. So if I can continue like this writing, like S, P, D, F, G, H, I, J. Okay, so that this will be 2H, 2P, 2D, 2F, 2G, 2H. This is 3S, 3P, 3D, and then 3F. Okay, so the sequence will be like this. As I told, 1S, 1P, 1D. मतलब पहले ये फर्स्ट कॉलम पे जाएगा. अगर हम इस तरह से इसको सीक्वेंस को समझें, मान लो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है.
ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में जो प्रेजेंट है पहले उसको ले लो, 1s 1p। अभी देखो इस वाले रो में, अब ये हुआ रो 1, ये हुआ आपका रो 2, ये हुआ आपका रो 3, ये है रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, रो 8। ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग प्रॉपरली, अदरवाइज ड्राइंग दिस वन विल बी डिफिकल्ट। अगर ये आप एक बार समझ जाओगे देन इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ द डायग्राम। आज टाइम नहीं होगा तो नहीं होगा, लास्ट बाद में करेंगे, लेकिन इसको पहले समझो। तो यहाँ पे समझने के लिए तीन चीजें हैं। मैंने पहले आपको बताया कि एस का क्या होता है वैल्यू, इट इज ऑलवेज हाफ। और एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, एस पी डी एफ जी एच आई के लिए इस तरह से निकालते हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर आई यू कैन राइट आई, दिस इज 6। So for 6 it will be what, 6 into 2, 12 plus 1 13 to the 26। in this way you can find out कितना number of particles exist होगा उसके भीतर। सर ठीक है। हाँ सर जैसे अफवाह प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन्स का जो शेप था घूमने का, एस में मान लीजिए सर्कल था, तो ऐसे ही न्यूक्लियॉन्स के लिए भी सेम ही है क्या, एस पी डी एफ के लिए? सर्कल नहीं होता है तो नहीं नहीं सर, मतलब प्रोलेट। एस के लिए सर्कल था, पी के लिए कुछ डंबल टाइप का था, डी के लिए कुछ अलग था, तो वैसे सेम है क्या इसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, दैट इज व्हाट यू आर रिलेटिंग विद द इलेक्ट्रॉन पार्ट, एटॉमिक मॉडल। हाँ तो सर इसमें वैसा कैसे होगा नहीं, न्यूक्लियॉन्स के इसमें लिए? इसमें न्यूक्लियॉन्स में रिमेंबर, न्यूक्लियॉन्स में कोई भी न्यूक्लियॉन सर्कुलर नहीं होता है। या तो वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना क्वाड्रुपल मोमेंट, तो क्वाड्रुपल मोमेंट में कभी भी जीरो नहीं होता, तो सर्कल ही नहीं हो सकता। या तो वो ऑबलेट होगा या तो प्रोलेट होगा। अब ऑबलेट कितना इसेंट्रिसिटी के साथ बढ़ेगा और प्रोलेट कितना इसेंट्रिसिटी के साथ बढ़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। इसेंट्रिसिटी डिफाइंस हाउ elliptical will be the orbit। Okay, so those things are there actually. What you are asking, it is also there in your masters. You will read about that. So there you will read a term called eccentricity। ओके, लेकिन याद रखो सर्कुलर नहीं होगा। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल के लिए एस पी डी एफ जी एच आई का वैल्यू और नंबर ऑफ पार्टिकल्स याद रखना है। इसके बाद यू शुड रिमेंबर द जे, जे इज कॉल्ड टोटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एल प्लस और माइनस हाफ। While filling this one, you see how I have written L plus or minus half, but नीचे मैंने L प्लस हाफ का वैल्यू लिखा, ऊपर मैंने L माइनस हाफ का वैल्यू लिखा। देखो हर एक के नीचे 5/2, B का 3/2, F का 5/2 ऊपर, 7/2 नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो नीचे होगा, यानी कि L माइनस हाफ will have more energy, that will be below। L plus half will be written below, L minus half value will be written up। ये याद रखना है। तीसरा चीज क्या हो याद रखना है कि ये सीक्वेंस तो कैसे होगा, जब आप रो वाइज एंड कॉलम वाइज जाओगे तो पहले जो प्रेजेंट है उसको पहले आपको लिखना पड़ेगा, 1s। तो आप कैसे सीक्वेंस बनाओगे, सो द फाइनल सीक्वेंस विल बी 1s। सब बोलो मेरे साथ, 1s फिर 1p फिर 1D 2S। ओके, यस 1d 2s। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि रो में 2s तो पहले आना चाहिए तो 2s आ जाएगा, नहीं, इट शुड गो इन ए प्रॉपर सीक्वेंस लाइक दिस। इसके बाद रो 4 1f 2p। देखो 1s 1p 1d, इफ आई कंपेयर दिस वन, देखो 1s then 1p then 1d then 2s then 1f then 2p, then you are getting 1g 2d 3s। देखो 2p के बाद क्या आया, 2p के बाद आ रहा है 1g 2d ds। फिर क्या आ रहा है, ऐसे जाओगे, ये खत्म होने के बाद फिर यू फील लाइक दिस, ये खत्म होने के बाद फिर फील अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये फिल होने के बाद अगेन कम टू रो 8 and fill from left to right। This should be your sequence। You cannot jump from one to other like you have done in your case of Abbas principle। है समझ में? Understood? यस। Okay।
तो ये हुआ आपका पैटर्न। इतना याद रखने के बाद हमको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं, उसके बाद ये जो मैजिक नंबर्स है ये ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, यू नो नीड नॉट वरी फॉर दैट, ये ऑटोमेटिकली बनेगा। कैसे बनेगा देखो, सपोज फर्स्ट वन इज फॉर 1p, तो यहाँ पे बना रहा हूँ 1p। ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ nuclear cell model energy level diagram. Okay, energy level diagram of cell model, and automatically we will detect the magic number. Let us see that. तो पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे पहले हम लेंगे 1s, और 1s का इस तरह से बनाना, ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, लाइक दिस, एंड यहाँ पे आप लिखोगे 1s, s के नीचे हाफ। रिमेंबर क्यों लिखेंगे हाफ, बिकॉज इट इज j वैल्यू। j वैल्यू क्या होता है, l प्लस हाफ, l माइनस हाफ। रिमेंबर this part is your j value, and what is your j value, it is plus half or minus half। अभी अगर आप, sorry, l I forgot to write here, l plus half and minus half। if I write l plus half, that means for s, l is what, 0, yes or no? Yes. Okay. For S state, L is 0, so 0 plus half is half. 0 minus half is minus half, but you cannot have a state having negative value. Remember that. इसीलिए 1s के लिए सिर्फ हम लिखेंगे 1s हाफ। ठीक है, अब इसके लिए ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ लिखेंगे और मैजिक नंबर यहाँ बनता जाएगा। ओके, and you can write this is energy level diagram। Okay, and let us write the value now। so number of particle का फॉर्मूला क्या है आपका, ये फॉर्मूला याद रखो, इसको बोलते हैं 2j plus 1। number of particle is written as 2j plus 1, this is the formula। इस यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स हैं, याद रखना है। ठीक है, this is 2j plus 1, this is capital J for example, right, same thing। okay, so 2j plus 1, j कितना हुआ यहाँ पे, हाफ, so 2 into half plus 1, यानी कि 1 plus 1 that is 2। similarly after 1s क्या आता है, 1p, isn't it? so only 1p, you see here, only 1p, there is nothing here। अगर यहाँ पे कुछ होता तो हम 1p के साथ साथ उसको भी लिखते। is it visible to all, am I clearly audible to all? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके इसको समझो। आर्शिया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Sir. शुभम? Yes, sir. ओके, चंद्रमा? चंद्रमा, आर यू एबल टू हियर मी, आर यू देयर? ओके, ऋतुजा? संकल्प? Yes, sir. Sir, I am here. ओके, जस्ट अ सेकंड। हेलो, Yes, sir. ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ 11ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କର, ପଚାରିକି ଯାଅ, ନହେଲେ ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେଠି ଦେଖିବ ଯଦି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିବ ତାହେଲେ କଥା ହବ। ହଉ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି। ହଉ 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 ହଉ, ମୁଁ ରଖୁଛି, କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି। ଓକେ, so look at here। so we completed for 1s, now we will go for 1p। okay, now as I told you, in 1p we'll have two energy levels, two sub levels। why? because p is having, for p your L value is 1, you can look at here, for
P, your L value is 1. So L plus half, L minus half. So 1 plus half, 1 minus half. So you'll have 3 by 2, 1 by 2. Is it clear to all? So my 1P, I will have like this. I will have 1P, 1P. So for P, L is equal to 1. So 1 plus half is 3 by 2. 1 minus half is 1 by 2. So जो छोटा होता है वो ऊपर लिखा होता है, जो बड़ा होता है वो नीचे लिखा होता है. ठीक है. Now what will be the number of particles present here? That is 2j plus 1, यानी कि 2 into half plus 1. So 2 into half is 1. 1 plus 1 is 2. Yes. सर 1/2 और 3/2 क्यों हुआ सर? 1/2 और 1/2 होना चाहिए ना सर? अरे आर करो, 1 प्लस हाफ और एक 1 माइनस हाफ. क्या होता है? एलसीएम लो, 3/2, 1/2. क्या हुआ? यस सर. और किसी को डाउट है? Anybody having doubt? All of you try to do with me. If you just copy down, then आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा. इसके बाद मैं और एक बनाऊंगा, उसके बाद आपको बना के मुझे बोलना पड़ेगा. ठीक है? You have to compare. Okay, so for 1p it is 1p 1/2, 1p 3/2. क्यों आया फिर से मैं बता रहा हूँ. p का स्टेट के लिए l का वैल्यू 1 होता है. फॉर l इक्वल टू 1, तो j का वैल्यू क्या होगा? l प्लस हाफ, l माइनस हाफ. तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2. सो 1/2 आ गया, मतलब ये आपका j वैल्यू है. अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2j प्लस 1. दैट मीन्स 2 इंटू हाफ प्लस 1, दैट इज 2. 2 into 3/2 plus 1, that is 4. And we know how many particles can exist in P state, that is 6. So you see, we got 6 or not? We got 2 plus 4 is 6, right? So for this you got 2, for this you got 2, for this you got 4. Now ये है आपका 1p के लिए पूरा, इस वाले एनर्जी लेवल के लिए. ठीक है. तो अभी देखो, पहला मैजिक नंबर तो हमको 2 मिल गया. अभी दूसरा मैजिक नंबर हमको चाहिए जो कि 8 है. कैसे होगा? सीक्वेंस इज यू हैव टू ऐड फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर जाएंगे. ठीक है. 2 प्लस 4 इज हाउ मच? 6. 6 प्लस 2 इज हाउ मच? 8. सो दिस इज माय मैजिक नंबर 8. आर यू फॉलोइंग व्हाट आई हैव डन हियर? यस सर. 2 plus 4, then plus 2. ठीक है. जरूरी नहीं है कि 2 प्लस 4 करने के बाद फिर ऊपर जाके आर करना है फिर 8 पाने के लिए. आपको नेक्स्ट मैजिक नंबर जहां पे आर करके मिलता है आप वहीं पे स्टॉप हो जाओगे. दैट विल बी योर मैजिक नंबर. आगे देखेंगे कैसे. ठीक है. ओके, सो दिस पार्ट इज ओवर. नेक्स्ट इज now all of you do for this one. After 1s 1p, next what you can see, देखो सीक्वेंस आफ्टर 1p रो 3 1d 2s. ठीक है. 1d 2s. so what I will write? Yes, any doubt? सर वो जो मतलब 6 वाला पार्ट है सर, उसमें सर 20 आएगा क्या इसमें मैजिक नंबर सर? नहीं समझा नहीं. मतलब इसकी बात कर रहे हो जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं? नहीं सर, जो 4 और 6 सर जो आपने लिया सर 1p 3/2 के लिए, हाँ ये उसका सर देखो मैजिक पहला नंबर में 20 आएगा ना? 20 क्यों आएगा? 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8. हाँ सर, वो तो 1p 1/2 के लिए हो गया सर. फिर सर उसके नीचे वाला सर 1p 3/2 के लिए. हाँ
तो उसके लिए भी तो सर एक मैजिक नंबर आना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, मैजिक नंबर हर एक सेल में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। सी वी आर इंटरेस्टेड जस्ट टू ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम। व्हाइल ड्राइंग द एनर्जी लेवल डायग्राम हम मैजिक नंबर हमको मिलते जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 1/2 स्टेट में मिला तो ये यहाँ पे भी वही 1/2 में मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, you'll be able to understand the next one. So for 1D, as we know that D means L value is what? 0, 1, 2. यानी कि L is 2 for D state. So 2 plus half, 2 minus half. So that will be 2 plus half. क्या होगा? 2 plus half क्या होता है? 5/2. Yes. वो आएगा नीचे, उसको नीचे लिखो। तो 1D 5/2. 2 minus half कितना आएगा? 3/2. Yes. उसको ऊपर लिखो 1D 3/2। अभी ये जो S है, हमको पता है कि S का तो भाई एक ही होता है, ठीक है। और वो नीचे इनके इसके नीचे जाएगा कि इसके नीचे जाएगा कि इसके ऊपर जाएगा, कैसे पता चलेगा? अभी S के लिए 0, L का वैल्यू 0 होता है। अगर S के लिए वैल्यू 0 हुआ तो S का हाफ होगा, 0 प्लस हाफ J वैल्यू। तो हाफ मतलब इन दोनों के बीच में आना चाहिए, है कि नहीं? यस तो सर. ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो ये इसके भीतर रहेगा, कहीं यहीं पे रहेगा 2S। अब देखो काउंट करते हैं। अब देखो ये है 3/2, यानी कि ये है आपका J, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो 2J प्लस 1 यानी कि 2 into 3/2 plus 1 that is 4. This 2 into half plus 1 that is 2. This is 5/2. 2 into 5/2 plus 1 that is 6. Okay. Now let us go for magic number. ये तो हमको ऑलरेडी मिल चुका है 2। 2 के बाद हमने नीचे से R किया 4, 6 हुआ था, 6 के साथ 2 R किया तो 8 हुआ, तो हमको फिर से एक मैजिक नंबर मिला। अभी हम क्या करेंगे? 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 plus 4 20. So this is my magic number. The next magic number. यानी कि इस वाले स्टेट के पास मतलब अगर कोई न्यूक्लियन है तो वो मैजिक नंबर दिखाएंगे, एंड दैट मीन्स दिस पार्ट इज मोर स्टेबल। So 1D 2S is over. Now you have to do another one. Then I will leave you for your lab class and I'll give you some assignment. Okay. So 1D 2S is over. So what is after that 1D and 2S? See your notes. Yes, 1D 2S. Next is what? 1F 2P. Isn't it? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Okay. Okay. So let us go for 1F 2P. तो हम लिखेंगे 1F 2P। पहले F का फिलिंग करते हैं। F का एक ऐसे ऊपर करो और एक ऐसा नीचे करो। F का कितना होता है? SPDF यानी कि 0 1 2 3। L is 3 for F. So 3 plus half, 3 minus half. 3 plus half means what? It is 7/2. So it is 1F 7/2. This is 1F 3 minus half यानी कि 5/2. Yes or no? Yes. Everybody got this? Now do for 2P. All of you do. P में कितना होता है आर्यन? What is the L value for P? Sir 1. Sir 2 आएगा Very sir, good. 1/2 और 3/2. Very good. So 2 आएगा 1/2 and 3/2. Asya, are you able to understand? Yes, sir. Very good. So 2P, तो अच्छा 1/2 and 3/2,
तो ये इसके ऊपर नहीं जा सकता कि ना ही नीचे आ सकता है, तो इन दोनों के भीतर रहेगा। तो one will draw like this, another one will draw like this. So this is 2p 1 by 2, this is 2p 3 by 2. Now find out total. So this is j, 2 into 5 by 2 plus 1 कितना होगा? संकल्प, what will be the value? All of you do it. Asya, what will be the value here? Six. Yes. So this is 6. Chandrama, what is the value for 2p half? Number of particles. Chandrama? Yes. How much? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। Are you able to understand? Chandrama? Chandrama, can you hear me? सर तुमको सुनाई दे रहा है मैं जो पूछ रहा हूँ? And tell the answer. For 2p 1 by 2, what will be the total number of particles? अरे बाबा समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, डोंट सिट साइलेंट, हाउ विल आई नो? शुभम, यस सर टेल मी Sir, व्हाट इज द 2. वैल्यू? 2 वेरी गुड, वेरी गुड. So this is 2. Now tell me what is the value for this one? 2p 3 by 2. the 4 Very good. What is then 7 by 2? sir 8 Very good. कितना easy है, simple है. Okay, so how to find out these values? We have to add from below. So 20 के बाद अभी यहाँ पे add करो 28, ठीक है नहीं? 28 Yes, plus sir. 4. You have to go from नीचे से ऊपर. 20 यहाँ पे आया था. अच्छा, क्यों हम 20 से ये ऐड कर रहे हैं? क्योंकि 20 हमारा मैजिक नंबर है. हमको मैजिक नंबर चाहिए भाई, हमको सारा नंबर नहीं चाहिए. टोटल नंबर तो हम बगल में लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग हियर, वी नीड द नेक्स्ट मैजिक नंबर. So you have to take the previous magic number and keep on adding from below to up, from down to up. Okay. So 20 plus 8, 28 plus 4, 32 plus 2, 34 plus 6, 40. So what is your next magic number? The next magic number will be 28. So you have to write 28 as your next magic number. Understood? देखो, हमेशा हमारा ऊपर में मैजिक नंबर आ रहा था, इस यहाँ पे भी ऊपर ही आया था, लेकिन यहाँ पे नीचे मैजिक नंबर आ गया. आपको मैजिक नंबर पॉइंट आउट करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है? सर कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे सिलेक्ट? क्या समझा नहीं, क्या डाउट है? सर मेरा डाउट ये है कि सर अब तक जितना भी हम लोग मैजिक नंबर सिलेक्ट किए हैं सब टॉप वाला था, आखिरी वाला. मतलब जैसे हम्म, ऊपर में 20 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, तो इसमें ये हम्म. लास्ट वाला ही सिलेक्ट क्यों किए? देखो क्या होता है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, हमको मैजिक नंबर सिलेक्ट करना है, मतलब ढूंढना है. जब पहले लोगों ने ये बताया था तो लोगों ने 28 पे स्टॉप नहीं किया था. उनको एक्सपेरिमेंट में मिला कि जिसका न्यूक्लियन नंबर 2, 8, 20, 28, 50 ऐसा है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है. और तुरंत इसके बाद जो नंबर आता है वो अनस्टेबल हो जाता है. मान लो एक न्यूक्लियन है जिसका मैजिक नंबर के साथ बराबर है 20, मतलब प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20. एग्जाम्पल ले लो कैल्शियम का, ठीक है नहीं? तो ये भी 20, वो भी 20,
तो कैल्शियम सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्टेबल, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर कैल्शियम जो आपका एलिमेंट है उसका बाइंडिंग एनर्जी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कंपेयर टू कैल्शियम। बिफोर कैल्शियम जो एलिमेंट है उसका, उस एटम का मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लोगों को लगा कि भाई ये स्टेबल क्यों हुआ, तो उनको पता चला सीक्वेंस से कि ये जो 2, 8, 20, 28, 50 ये जो नंबर्स हैं, these numbers bearing the nucleon number are more stable. That means the nucleon which is having this are more stable.